Hello everyone, this is Amrita, all in the rank 6K, getting into the topmost medical college of my state. Um, I was actually getting ready for a family function. My family is all upstairs getting ready. I just sat down very randomly to shoot this video without script, anything, nothing. Because I remember last year how I didn't go out for a single day the whole year. How I didn't like to socialize, I didn't like to attend family functions, parties because तुम जहां भी जाओ एवरीवन विल बी लाइक अरे ड्रॉप ले रही हो इस बार मीट नहीं हुआ इससे तो बस फैशन करवा लो और क्या होगा पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती कहाँ पे ड्रॉप ले रहे हो कितना पैसा everybody was like this. That's why I stopped attending family functions last time. Right now, currently, I am getting ready to attend parties and functions because apparently everybody wants to see me. Everybody wants to congratulate me. Every relative of mine is urging our parents कि make sure अमृता आ रही है पार्टी को अमृता आना चाहिए. Everybody wants to see her. उससे आना चाहिए. Apart from that, you see this diary here, this little baby here. I used to pour my heart out whenever I used to feel angry or sad during my whole year. No human being, no friend, nothing. Only this was my only companion throughout the whole year. And even now, there are some pages I can't even dare to read because it breaks my heart so much to see what I went through. But here is something I want to show you all. Today is October 14th. Today is October 14th, and this is I can't zoom. This is a diary entry from 9th October 2024, and I have written here. What is actually wrong with me? 500 out of 720. Why is everybody just doing better than me? I hate myself. This speaks everything I want to speak. This speaks every self doubt, the constant comparison with others' marks, the waves of depression, the sleepless nights an aspirant goes through. And you won't believe me, I was a type of kid whose entire mindset depended on marks. Like, I used to skip meals. I used to skip meals whenever I didn't score well in any. I mean, my mindset was so focused on marks, on this very exam, on this very marks, that marks decided how my day will go today. Marks decided whether or not I will have lunch today or not. And another thing, you see my hair right now, like मेरे बाल तब इतने झड़ते थे लाइक वन डे मैं बस फ्लोर पे बैठ गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैं किसकी टेंशन लूं शुड आई वरी दैट आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स इन मॉक टेस्ट और शुड आई वरी कि मेरे इतने बाल झड़ रहे मैं टेंशन लूं तो किसकी टेंशन एंड आई वाज टोटली अलोन इन माय होल टर्म ईयर लाइक मेरे पास कोई नहीं था आई टोटली आइसोलेटेड माई सेल्फ आई आई वाज इन हॉस्टल एंड मेरा अपने पेरेंट्स के साथ भी इतना बात नहीं होता था लाइक वंस और ट्वाइस इन अ वीक दे विल से हाँ पढ़ाई करो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म अस एंड I didn't use social media for a whole year. I didn't use phone for a whole year. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nothing. I was totally alone. I was totally alone. I had no one in my whole journey. And I believe if you are a true aspirant, if I seek a spot need, then you will also do the same. Because this is just a matlab, this is just very necessary. This is just very necessary in order to achieve success. I was not involved in any kind of friendships, in any kind of parties. Like nobody knew what I was doing. Nobody knew whether I'm alive or not. I had no contact with any of my friends. I used to eat, sleep, study, and that's all. That's all I did in my whole job year. And another thing, I think the hardest part about being an aspirant is self doubt. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि I have thought, should I change my path? Is this MBBS field really not for me? And then in this diary only, I have written many times, कि is MBBS worth it? Is a NEET seat so important that I have to give up everything in my life in order to achieve it? And after doing so much things, क्या मैं एक NEET seat पाके खुश रहूंगी? But मतलब बहुत कुछ. And sometimes like I get so overwhelmed thinking about the future. कि what if I fail? What if after doing everything, last moment में एग्जाम हॉल में ही कुछ गलती कर बैठी? Like व्हाट इफ मैंने ओएमआर ही गलत भर दिया एक ओएमआर गलत भर दो एंड नया सब कुछ नया ही मतलब रैंक तो क्या है तुम कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे व्हाट इफ लाइक कुछ हो गया एंड आई डिड नॉट सक्सीड क्या मुंह दिखाऊंगी पेरेंट्स को पेरेंट्स क्या बोलेंगे घर कैसे जाऊंगी पेरेंट्स क्या बोलेंगे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे ड्रॉप लेके क्या उखाड़ दिया क्या कर दिया हमने मना किया था ड्रॉप ना लेने को क्या कर ली ड्रॉप लेके कुछ हुआ तो नहीं रैंक तो छोड़ो कुछ भी नहीं मिला इससे अच्छा तो बीएससी कर लेती इंजीनियरिंग कर लेती है
बहुत कुछ। एंड आई एम अ वेरी ह्यूज ओवर थिंकर, लाइक द बिगेस्ट ओवर थिंकर यू कैन सी। मतलब आई विल बी स्टडिंग एंड बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होगा, ये सब कुछ मतलब जो मैं बोल रही हूँ सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होगा। एंड आई फील सो हैवी, इतना हैवी फील होता था कि मैं पढ़ रही होंगी एंड मेरे आंसू गिर रहे हो। आई वुड बी क्राइंग थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड देन अगेन नेक्स्ट मोमेंट फिर खुद को समझाना पड़ता है कि अमृता व्हाई आर यू वरिंग, टाइम है अभी भी, एवरीथिंग विल गो राइट, हैव फेथ इन गॉड, लाइक वो तुम्हें पार करा देंगे। बहुत कुछ। आई थिंक टैलेंट is something that this field does not require. This field requires hard work and the most important of all, how to be emotionally, like how to emotionally tackle with things, how to tackle with your emotions. Because I am a very emotional girl. I connect myself emotionally with many things. I connected myself emotionally with marks, with need. That's why मतलब मेरा ऐसा situation था and मतलब पूरा journey like very depressing. It was very depressing. But trust me, the moment I saw my rank on my computer screen, like on June 14 exactly around 11 to 11:30 a.m. मेरे दिमाग में बस एक बात आई कि ब्रो एवरीथिंग वाज वर्थ इट, एवरी टीयर दैट आई क्राइड, जितना ओवरथिंकिंग मेरे को हो रहा था, लाइक जितना टॉन्ट्स मैंने सुना था, सारे हार्ड वर्क, एवरीथिंग, आई वाज लाइक अमृता एवरीथिंग वाज वर्थ इट। इमेजिन व्हाट इफ, लाइक अगर तुमने गिव अप कर दिया होता, आई वाज लाइक ब्रो फाइनली आई डिड इट, आई वाज सो हैप्पी। एंड द अमाउंट ऑफ जॉय यू सी ऑन योर पेरेंट्स फेस, लाइक I am afraid I can never be that happier again in my life. I can never see my parents be that happy again in my life. I mean, I might achieve something bigger than this in future. I might do something better than this in future. But bhai, like that moment was so priceless, so priceless. I mean, an unforgettable moment in my life. And I got so many bouquets, so many flowers and gifts from everyone. Like the same relatives who never called me once to ask if I'm okay, who never checked on me. The same relatives are calling me every single day, are calling my parents every single day. They also, you won't believe, they also want to click pictures with me. They are coming to our house and they are saying that they want to click pictures of me because I'm going to be a future doctor. And also मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ लाइक 2-3 साल से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, वो सब भी मेरे को टेक्स्ट करें लाइक ओ अमृता वी हर्ड यू क्रैक द नीट एंड कांग्रेचुलेशंस, डू यू हैव टाइम, कैन वी हैंग आउट, लाइक हाँ यार बड़ी अब लाइक तू तो बहुत तेरे में तो बहुत ईगो आ गया है, तू तो मतलब बड़े इंसान हो गए हो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, लाइक they are constantly asking me, Amrita, if you want to hang out, we want to hang out with you, we want to meet you, like I'm like the same ones who used to shame me कि क्या कर लेगी इतना पढ़ के, ड्रॉप लेके तो कुछ होने वाला नहीं, इतना बच्चों ने ड्रॉप लिया था, किसका कुछ हुआ नहीं, तू क्या ज्यादा उखाड़ लेगी ड्रॉप लेके। The same ones who used to say like this, the same ones they want to hang out with you. And like from that day my life has changed. Need actually changes your life। मतलब 12th में मैं बहुत वीडियोस देखती थी कि हाँ नीट कर लो उसके बाद ऐसे ऐसे, भाई नीट कर लो उसके बाद आई कैंट से अबाउट एमबीबीएस, आई हैव नॉट स्टार्टेड एमबीबीएस, बट नीट कर लो, बट उसके बाद जो 4 to 5 months का गैप रहेगा उसमें ऐश ही ऐश। इट फेल्ट लाइक I cracked NEET and I got everything I lost. I got every person I lost. I got everything I lost. I got everything I wanted. I got everything I wanted. And if I see this today to the aspirant in me who wrote, I hate myself in this diary because she couldn't score well in a mock test. If I say this today to that aspirant who thought her world was crumbling down because she just scored uh, very bad in mock test, I think she would never believe. She would never believe that she would be this happier today. She would have never believed what she is today. And this is the motivation. This is the only motivation you need to keep going. Like तुम्हें लगेगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब हो जाएगा, your life will change. Your life will fucking change. Like सबका behavior from मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों से लेकर इतने मतलब बड़े बड़े लोग तक सबका behavior change हो जाएगा. Everyone will start to behave with you differently. Everyone will start to perceive you very differently. Everyone will think, oh my god, the ideal student, the ideal girl. मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को लेके भी उनका माइंडसेट चेंज होता जाएगा। मतलब तुम जो चाह रहे होगे ना उसके बाद लाइक तुम कुछ बोल रहे होगे, तुम्हारे डिसीजन का अलग ही रेस्पेक्ट होगा लोगों के पास। यस, नीट एक्चुअली gets you so many things in life. एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे 2 बार बुला चुकी है, आई हैव टू गो नाउ, सो या दैट्स ऑल। कुछ भी बकबक करती है, signing out from this video and officially signing in as off your checkup.